So let's start today's class where we are going to discuss about heat transfer and effects of heat. So in this class, heat is going to be understood on the basis of its effect. तो heat के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में भी हीट के बारे में था, क्लास 7 में भी हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ा था। अब क्लास 8 में भी हम लोग हीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हीट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे उन सब पॉइंट्स को ताकि ये इजी हो जाए, और फिर हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को मेन टॉपिक क्या डिस्कस करना है। ठीक है, सो लेट्स सी द हाइलाइट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो बेसिकली हम लोगों को समझना है व्हाट इज हीट, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ हीट। Then we have to understand the concept of temperature and how the temperature is related to heat. Then we are going to understand some of the effects of heat, such as, for example, change in the state of the body as well as thermal expansion. वैसे मोस्टली हम लोगों का ये चैप्टर जो फोकस कर रहा है वो कर रहा है थर्मल एक्सपेंशन के लिए, विच इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट। तो जब हीट सप्लाई होती है किसी मैटर में तो कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उनमें से ये एक इफेक्ट है। So let's continue with the chapter and let's understand what all things are present. So before we go to the other things, let's discuss the very important and the main component of this chapter, that is heat. तो heat होता क्या चीज है, किसको कहते हैं heat, या heat के को define कैसे किया जा सकता है, हीट हमको कहाँ पे मिल सकती है, या फिर इससे क्या मतलब है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं या समझते हैं, then we do used to say that heat is a form of energy. We do used to have several forms of energy around us. कई सारे तरह के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। कई सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हीं में से अगर हम लोग देखते हैं, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट हीट इज ऑल्सो कॉल्ड टू बी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। And when we do used to experience the heat, or when we do used to say that heat is present around us, then we can see several examples for it. कई सारे चीजों को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी आइस को अपने हाथ में होल्ड करते हैं, देन वी डू यूज टू फील कोल्ड ओवर देयर। अगर हम लोग किसी गर्म बर्तन को छू लेते हैं, देन वी फील हॉट ओवर देयर। So the condition of heat is present everything in everything, whether the object is hot or whether the object is cold, everything contains heat. हर चीज में heat की presence है। Even though our body is also having heat, हमारी body जो है वो भी उसमें भी heat है। You know this thing that our body's normal body temperature is 37 degrees Celsius. That is because of the internal heat. ये हमारे body के heat के वजह से होता है। So we do used to eat food. The food which we are eating, it is releasing the chemical energy, and that chemical energy gets converted to heat energy. And because of that only we are able to survive, and we are able to make our body to move and to do any particular kind of thing. And over there only, when we are talking about the heat, then we need to remember the concept of temperature also. Because the temperature is the denotation of how hot or cold any object is. सो किसी भी बॉडी में कितनी हीट है ये उसके टेम्परेचर से आइडेंटिफाई होती है। एंड हीट हर बॉडी में होता है, वेदर इट इज आइस और इट इज हॉट वाटर, एनीथिंग कंटेन्स हीट। बट यस, देयर इज डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। अगर हम कंपेयर करते हैं आइस को विथ हॉट वाटर, ठीक है, अगर हम हॉट वाटर के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, देन वी डू यूज टू ऑब्जर्व दैट आइस हैव लेसर अमाउंट ऑफ हीट, बट इट इज नॉट लाइक दैट आइस डोंट हैव हीट। आइस इज आल्सो हैविंग हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस और लेस देन टू दैट आल्सो. So that you need to remember. So whenever we talk about heat, heat is actually a form of energy which is present in any matter. Now the question is there that how and where the heat is coming in a matter. किसी भी मैटर में कहां से या कैसे वो हीट आता है। So let's understand this one with a simple concept with what we had already discussed previously. हम लोगों ने मैटर के कॉन्सेप्ट को समझा था, मैटर का कॉम्पोजिशन हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पर हम लोगों ने समझा था कि मैटर आर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कोई भी तरह के मैटर के को अगर हम लोग लेते हैं, देन वी नो दिस थिंग दैट मैटर is made up of tiny particles. And there are some specific characteristics
और द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स की अगर हम लोग स्टडी करते हैं या उन पार्टिकल्स को देखते हैं तो उनकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने को मिलती है। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि याद होना चाहिए तुम लोगों को कि द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, द पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, the particles have a space between them, and the particles are in continuous motion. So when we do used to say about this particular character, जब हम लोग बात करते हैं कि the particles are in continuous motion, then this particular character or this particular behavior gives it the heat or the heat energy in a particular body. जब भी किसी भी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी की बात आती है, तब उस बॉडी के इंटरनल काइनेटिक मूवमेंट की बात आती है। The continuous movement of the particle gives it the thermal energy. किसी भी मैटर के अंदर ये थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, and that thermal energy is actually the sum of the kinetic energy and the potential energy of those particles. हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो होपफुली यू ऑल नो and recognize these two forms of energy. So actually when the particles are continuously moving in a matter, then due to this movement, the kinetic and potential energy generates, and due to the sum of this kinetic and potential energy, we can experience the heat energy. तो किसी भी मैटर के अंदर जो बता रहे हैं हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ओवर देयर. Now, one very important thing over here, that we know that in solid the space between the particles is minimum. In liquid the particles are little bit far away from each other, and in gases the particles are very much far away from each other. So जब हम लोग पार्टिकल्स के इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पार्टिकल्स के इस अरेंजमेंट के वजह से पार्टिकल्स का मोशन भी डिटरमाइन होता है. अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, जैसे अगर वो सॉलिड के स्टेट में है, तो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक मूवमेंट होगा वो कम होगा. वहीं पर अगर लिक्विड में देखते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा. और गैसेस को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है या इन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है. And due to this, we do used to observe that the gases have more heat energy than to a solid. So अगर हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वाटर की कंडीशन में लेके देखते हैं, आइस के केस में अगर देखते हैं, सो आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. So over here, particles are very close to each other. Thus, the space between the particles is minimum, and because of that, the kinetic movement of the particle is minimum. And because of it, its heat energy is quite low. But when we go to the water, then we do observe that the particles are continuously moving. The particles have a space between them. And because of that, it is a little bit hot than to the ice. And if we go to heat it more strongly and convert it to steam, then it will become very much hot. Now, why? Because of this heat, the particles got very much excited. And due to that, the particles are vibrating here and there. It is moving randomly here and there. And because of this particular condition or because of this particular situation, we do observe or we do used to say that it is having maximum amount of heat. So ये जो heat है, heat is an internal character, and that character comes with because of the continuous movement of the particles. जब particles continuously move करते हैं तो उसके वजह से ये आती है. Now we need to represent this heat also as it's a physical quantity. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले, जहां पर हम लोग जानते हैं कि एनी काइंड ऑफ क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ फिजिकल क्वांटिटी. So heat is also considered to be as a physical quantity. And as it is a physical quantity, it had to be represented with a particular unit. So there is a SI unit of heat. So as heat is a form of energy, hence we represent it with joule. तो heat का जो SI unit है वो तो joule है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ कॉमन यूनिट है
जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी इसका यूज किया जा सकता है। क्वांटिटी ऑफ हीट यूज्ड पर यूनिट टाइम के बेसिस पर इसको हम लोग दिखाते हैं वॉट के रूप में। एक और कॉमन यूनिट है हीट के लिए जिसको हम लोग कैलोरी कहते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू रिमेंबर दैट 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 4.184 जूल, लेकिन उसको हम लोग राउंड अप में 4.2 जूल कंसीडर करते हैं। So these are the units which you have to use for the representation of heat. So once again, when you go for the representation of heat, if you are using the SI unit, then you have to represent it with joule. SI unit joule के रूप में ही इसको एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अगर उसके कुछ और यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, देन कैलोरी या ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट मोस्टली वी डू यूज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी इन SI यूनिट्स ओनली। ठीक है, now, let's move to the next part where we have to understand the various effects of heat. When we are talking about heat, then we know this thing that when heat been supplied to a matter or when heat been absorbed from a matter, then we can experience some of the phenomena, some of the condition over there. So what are those conditions? Let's understand. तो जब भी हम लोग किसी भी मैटर में हीट सप्लाई करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन देख सकते हैं। Now, it needed to be remember that all the effects which we are going to understand over here, यहाँ पे जो भी effects हम लोग देखेंगे, they are not going to be observed in all the conditions. It is not possible that in all the situation we will experience all these things. ये सारी चीजें वहां पर एक्सपीरियंस किया जाए, ये नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इनमें से कुछ चीजों को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और इनको एक्सपीरियंस करने के लिए जो मेन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोगों की होगी कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स के लिए जिसमें हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है। जब हम कहते हैं हीट से होने वाले कुछ इंपैक्ट्स, तो मोस्टली इंपैक्ट्स हम लोग कंडक्टर्स के लिए बात करते हैं। इंसुलेटर के लिए हम लोग ना के बराबर बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इंसुलेटर होते हैं they either may catch fire or they will not react anyhow when the heat is supplied or absorbed from it. ठीक है, मोस्टली कंडक्टर्स में ही ऑब्जर्वेशन होती है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों का होगा, देयर विल बी अ चेंज इन टेम्परेचर। So when we are supplying heat or when we are absorbing heat from the body, then we will observe that there will be a gradual change in the temperature over there. जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं या हीट अब्सॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर में चेंजेस आ जाती है। जैसे से एज फॉर एग्जांपल, राइट नाउ इट इज लिटिल बिट कोल्ड, नॉट सो वेरी कोल्ड, बट देन आल्सो इट इज लिटिल कोल्ड। So say as for example, the water which you had got with from the tubewell or the water tap, it is say as for example 20 degrees Celsius. Okay, now you don't want to drink this much of cold water, you want to heat it up over there. So what you will do, you are going to supply heat to this. And when you will supply heat, you will observe the very first thing is that there will be a change in temperature. तुम इस पानी को जब गर्म करोगे तो जो सबसे पहला चीज तुमको दिखेगा, यहाँ पर इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। So its temperature is going to rise, and say as for example it reached to 30 degrees Celsius. Now you thought that this is appropriate for you, you can drink it. So that is the thing which we have to remember when we are supplying heat. जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं यानी देते हैं किसी मटेरियल में, तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम हीट अब्सॉर्ब करेंगे, अगर उसमें से हीट अब्सॉर्ब करेंगे, सच एज फॉर एग्जांपल यू डू यूज टू कीप थिंग्स इन योर रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिज। तुम लोग घर के फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में कोई चीज रखते हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हीट अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स कूल डाउन, वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है। सो दैट वी नीड टू रिमेंबर। The next thing is that on supplying of heat, we may observe chemical change in a substance. जब हम लोग हीट देते हैं किसी मटेरियल में, तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन हैड टुक प्लेस, and because of that chemical reaction we will observe some kind of changes over there. कुछ तरह के चेंजेस को हम लोग वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, that is due to the supplying of heat. So it can be in any form, such as if we are heating the marble, okay, then what will happen, then calcium oxide and carbon dioxide will come out of it. Okay, so it will turn into calcium oxide and carbon dioxide. So carbon dioxide will come in the gaseous form and calcium oxide will remain at the backside.
So that is the condition. In a simple way, if I will give one more example, at your home only, when your mother used to cook food, so when she is cooking any kind of food, she is using heat over there. So while heat is supplied, what happens, a chemical reaction goes on in the food and it gets changed from what it was in the beginning. जब किसी खाने को पकाया जाता है, तो उस टाइम में जो हीट सप्लाई करते हैं, उस हीट हीट की वजह से उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो कंपोनेंट चेंज हो जाता है एक नए तरीके के फॉर्मेशन के अंदर. So that is also one of the effect which we can experience due to the supplying of heat. The next thing is that if anything is flammable, if we are supplying heat to it, then what will happen? It will catch fire. I hope you all remember about the insulators which I was talking about right now. Before I had started this effect of heat, जब हम इस effect of heat के बारे में बता रहे थे, तो हम बोले थे ज्यादातर कंडीशन हम लोग कंडक्टर्स के लिए बात करेंगे, लेकिन कुछ समय हम लोग इंसुलेटर्स के लिए भी देख सकते हैं. तो इंसुलेटर्स के अंदर जब हीट सप्लाई करते हैं, तो दो सिचुएशन हो सकता है. एक कि वो या तो आग पकड़ ले, या तो वो किसी तरह से कोई रिएक्ट करे ही नहीं वहां पर. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है. सो जब हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे इंसुलेटर को देखते हैं विच कैन कैच फायर. So when it catches fire, then we need to remember this thing, that initially heat was supplied to it and the particles were absorbing the heat, but it was unable to transfer the heat. जब हम लोग किसी भी तरह किस तरह के मटेरियल में हीट सप्लाई करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन बस उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, उसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं. तो वो सारा हीट क्या होता है, उन्हीं पार्टिकल्स तक पहुंचते चले जाता है. एंड एट अ सर्टेन टाइम व्हेन द पार्टिकल्स रीच टू इट्स मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जब कोई पार्टिकल एकदम मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है जहां के आगे वो और हीट को एब्जॉर्ब ना कर सके, वहां पर उसको कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर, एंड एट दैट टेम्परेचर इट कैचेस फायर. So that is also one of the effect of heat. So when we are supplying heat to substances which are flammable, or we can say that some insulator which can catch fire and unable to transfer the heat, over there we can observe on supplying heat, suddenly it catches fire. So when it will catch fire, it will catch fire when it will reach to its maximum ignition temperature. So that can be obtained on supplying of heat. जब हम लोग heat supply करेंगे तभी ये चीज हो सकता है. The next thing which we can observe on supplying of heat, that is the change in the physical state of the matter. On supplying of heat, we can observe that a matter can change its physical state. So what are the physical states? Normally we do have three different states of matter: solid, liquid and gas. ये तीन अलग अलग states of matter है जिनको हम लोग experience करते हैं. Now, when heat is supplied to the matter, it may possible that it will change its physical state. But why I said it may possible? Now, why it is? It is because all matter doesn't changes its physical state on supplying of heat. Again, this can be observed in the conductors only. अगर हम लोग कंडक्टर के लिए बात करते हैं जहां पर हीट की ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी है, then only we can observe that the heat can change its physical state from solid to liquid or liquid to gas, and vice versa if heat been absorbed from it. अगर हम लोग हीट को absorb कर लेते हैं तब क्या हो सकता है, वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है. बट we need to remember this can be only be experienced in conductors. Okay, conductor में ही सिर्फ हम लोग ऐसा देख सकते हैं. Now, the last one which we have to understand over here on the effects of heat, that is on supplying of heat, we may change, or we can observe that there is a change in the shape and size of the body. Okay, so either the body will expand or it will contract. So expansion and contraction, or we can say the change in the physical shape of the body. अगर किसी body का जो physical shape है उसमें अगर कुछ changes आ जाती है, physical shape में उसकी length, breadth, height, इन सब में अगर किसी तरह की कोई changes आ जाती है, then that will be considered to be as the effect of heat. So expansion and contraction is one of the condition which we can experience. So on supplying of heat, it will expand, and on absorption of heat, it will contract.
So these are the two situations which we can experience on supplying of heat. So there are 5 effects which we had just now understood. 5 अलग-अलग effects या impacts को हम लोग ने यहाँ पर समझा है, ठीक है? Now, let's move to the next part where we are going to understand a little more on the effects of heat. तो देखो हम लोग जो ब्रॉडली एक्सपीरियंस करते हैं या जो मेनली एक्सपीरियंस करते हैं उसमें से हम लोग 3 चीजों को समझते हैं. On supplying of heat, we can observe the change in the temperature. On supplying or absorption of heat, we do use to observe the change in the shape of the body. And on supplying of heat or absorption of heat, we do use to observe the change in the physical state of the matter. But other effects are also present over there. Now, while we were talking about this thing that heat can change the or causes some kind of effect. जब हम लोग ये कहते हैं कि heat के वजह से कुछ particular effect cause हो सकता है, either the change in temperature or change in shape and size, or can catch fire or can perform some kind of chemical reaction. All these things needed to be understood with one important thing, that to perform any kind of effect, जो भी effect हम लोगों ने देखा, जैसे कि for example say as change in the state of the matter, या हम लोग देख सकते हैं change in the shape and size of the matter. इसके लिए एक बहुत important चीज होना जरूरी है, that is the transfer of heat. That till that time heat is not been transferred from one end to another end, we will not be able to experience any of the effect, neither the change in the temperature nor the change in the physical state or the change in the, its shape and size. किसी भी तरह के इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इट इज कंपल्सरी दैट हीट शुड बी ट्रांसफर्ड. So how the heat used to be transferred? हम लोगों ने class 7 में इसको पढ़ा हुआ है. So there are 3 methods by heat used to be transferred. The first one is conduction. The next one is convection. And the third one is radiation. So a short briefing about it. हम लोगों ने जाना है कि conduction can be done in the solids. ठीक है? Solid where the heat is transferred from one particle to another particle. Convection is a condition of transferring of heat by the actual movement of the particles. Thus, it can be experienced in liquid as well as in gases. So in liquid and gases, we do use to observe convection. And then we have radiation. So in radiation, it is not needed that there will be any kind of medium. Without the medium also, the heat can be transmitted or can be traveled from one place to another place with the help of radiation. So these are the 3 methods or 3 ways by heat can be transferred. Heat को transfer होने के लिए ये 3 अलग-अलग methods हैं, और जब इन method में से किसी भी एक method से heat का transfer होता है तो जिन effects के बारे में हम लोगों ने discuss किया उन effects को हम लोग वहां पर observe कर सकते हैं. ठीक है? Now let's see a little bit of those effects what we had just now discussed. The change in the temperature. जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं या हीट अब्सॉर्ब करते हैं, दोनों ही कंडीशन के अंदर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंजेस आ जाती है. Now, while we were discussing earlier about the heat, we had understood this thing that temperature is the denotation of how hot or cold any object is. कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है, ये हमको उसका टेम्परेचर बताता है. तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को और गर्म कर रहे हैं, वो जितना गर्म है उससे और गर्म कर रहे हैं, या वो जितना गर्म है उससे उसको ठंडा कर रहे हैं, so over there we will observe that there will be a change in temperature. A very common thing, say as for example water is at 20 degrees Celsius. If I say that I am increasing its temperature to 22 say as for 40 degrees Celsius, say as I just erase that one. Okay, so say as from 20 to 40 degrees Celsius, then automatically you will say that you had raised its temperature, means you had increased its heat energy. Whereas if I will drop its temperature to 10 degrees Celsius, then what it means? It means that you had absorbed heat from it. So if you are supplying heat, then the temperature will rise. If you are absorbing heat, then the temperature will fall down.
So this is the basic principle or the basic condition which we do use to observe. Yes, Divyanshu? सर हीट जब रिजेक्ट होगा उस टाइम ना टेम्परेचर डिक्रीज होगा. Pardon? Heat जब? सर सर हीट रिजेक्ट होगा उस टाइम ना टेम्परेचर डिक्रीज ओके, होता है. हीट रिजेक्ट होने का मतलब होता है, जब हम लोग हीट रिजेक्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट कम्स अंडर अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. हीट रिजेक्ट होने का मतलब होता है नाइदर द बॉडी इज लूजिंग हीट नॉर द बॉडी इज गेनिंग हीट. इट इज रिजेक्टिंग हीट टू बी ट्रांसफर्ड और टू बी अब्सॉर्ब्ड. वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, जहां पर अगर मान लो दो बॉडी है, से एज बॉडी ए एंड बॉडी बी. ठीक है, अब बॉडी ए है 20 डिग्री सेल्सियस पर और बॉडी बी है 20 डिग्री सेल्सियस पर. इफ दे बोथ हैड बीन ब्रॉट टुगेदर, अगर दोनों को अगर हम एक साथ रखते हैं, देन देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट. So that is called to be as the heat को reject करना है. There is a rejection of heat. But suppose for example I had taken a body A which is at 20 degrees Celsius and there is another body B say as which is at 60 degrees Celsius. So understand over here what will happen. Heat will be transferred from body B to body A. बॉडी बी से हीट ट्रांसफर होगा बॉडी ए में. जैसे ही इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे, बॉडी बी से बॉडी ए में हीट का ट्रांसफर होगा. एंड ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ हीट, बॉडी ए विल गेन इट्स टेम्परेचर और इट विल इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी बढ़ने लगती है. वेयर एज बॉडी बी विल लूज इट्स टेम्परेचर और इट विल लूज इट्स हीट. तो बॉडी बी का टेम्परेचर घटेगा और बॉडी ए का टेम्परेचर बढ़ेगा. सपोज मान लो बॉडी ए का टेम्परेचर पहुंच गया 35 डिग्री सेल्सियस पे और वहीं पर बॉडी बी का टेम्परेचर अभी घट रहा है, से एज वो पहुंचा अभी 40 डिग्री सेल्सियस पे. थोड़ा सा और अब ये हीट ट्रांसफर होगा, से एज ये पहुंच गया 37 डिग्री सेल्सियस पर और ये भी पहुंच गया 37 डिग्री सेल्सियस पे. देन आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, you will observe that there will be no flow of heat. यहां पे तुमको क्या दिखेगा, अब यहां पे कोई फ्लो नहीं हो रहा है, because they become constant over there. So remember, when a body loses heat, when the heat is coming out of it, say as for example, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने वाटर बॉटल में पानी भर के फ्रिज में रख दिए हो. ठीक है, तो फ्रिज में जब रखते हो तो वहां पर होता क्या है, फ्रिज के अंदर हो क्या रहा है. तो फ्रिज के अंदर असल में कन्वेक्शन करंट से हीट को अब्सॉर्ब किया जा रहा है. से एज फॉर एग्जांपल तुमने बोतल में जो पानी रखा था, इट वाज एट 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड आफ्टर कीपिंग इट इन द फ्रिज कंटिन्यूअसली गैसेस आर मूविंग और वो ठंडा होता है. सो इट काउजेस अ कन्वेक्शन करंट. इट टचेस and absorbs the heat, touches and absorbs the heat, and because of that slowly this bottle's heat is getting escaped out. इसका जो हीट है ये बाहर चले जाता है और जैसे जैसे इसका हीट बाहर चले जाता है, what will happen, its temperature will start falling. So from 30 degrees Celsius to it will reach to 20 degrees Celsius, it will fall a little more and it can reach to 10 degrees Celsius. If you will keep it for a longer period of time, then it will change to 5 degrees Celsius or less than that also. So when heat is given to a body, temperature rises. When heat is absorbed from the body, then its temperature falls down. And how much heat we are giving to the body and how much heat is absorbed by the body, that can be calculated with this formula. यहाँ पर इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हम लोग क्लास 10th में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको कि अभी हम लोग को यूज नहीं करना है. यहाँ पर m दिखा रहा है मास को, c दिखा रहा है द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी एंड डेल्टा t दिखा रहा है चेंज इन टेम्परेचर. इसके बेसिस पर हम लोग निकाल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट. सो क्वांटिटी ऑफ हीट के बारे में जब बात कर रहे हैं, अगेन द अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड टू द बॉडी एंड द अमाउंट ऑफ हीट विच इज अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, दोनों का कैलकुलेशन ये कर सकता है. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर. ओके, यस सर. let's see to the next part where we have to understand the change in the physical state of a matter. So when we are supplying heat to a body,
then we do used to observe that the physical state of the matter can change. इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जहां पर हम लोगों ने काइनेटिक मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल को ऑब्जर्व किया था ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाइंग ऑफ हीट और टू इन द कंडीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जब हम लोग चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे थे. सो दैट इज ओनली ओवर हियर. तो जब हम लोग किसी मैटर में हीट सप्लाई करते हैं, एंड मोस्टली दैट इज अ कंडक्टर, कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, then what will happen, the heat will be transmitted from one molecule to another and another molecule to another, and so on, it will pass all around the body. And as the heat is transferred over there, we will observe that there will be a phase where it will change the state of the matter from one to another. And that is the thing which we have to understand. So अगर किसी सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से पार्टिकल्स टाइटली बाइंडेड होते हैं. लेकिन अगर इसमें हम हीट सप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाती है. एंड जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया, वहां पर क्या होगा, पार्टिकल्स विल स्टार्ट स्प्रेडिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. And as the particles are starting spreading away from each other, it will change its physical state from solid to liquid. वो क्या करेगा, अपना physical state solid से liquid में convert कर देगा. Then, if you are supplying it more heat, then it will change its physical state to a gaseous form. Because what will happen? Due to that heat, its intermolecular attraction force will become so very weak that it will leave all the particles alone, and the particles will move away from each other. And that will lead to a condition where it will change to its gaseous form. And there is a situation when it will be strongly heated. The gases are going to be strongly and extremely heated. Then it will change to its plasma form. That is also a state which we have to understand and remember. So all these conditions which we are understanding, all these things which we are understanding, that is because of the supplying of heat to a matter. जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? Now, here is a specific condition where we can observe the change in the state of matter from solid to liquid, which is called to be as the melting, then liquid to gas, which is called to be as condensation, and from gas to liquid, which is called to be as, sorry, the change in the state from the liquid to its gaseous form, evaporation, and then conversion of the gas to its liquid form as the condensation, and then liquid to solid form as the freezing condition. तो ये सारे जो इवेंट्स हैं या ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है. मेल्टिंग क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है. फिर इसी कॉलम में एक डायरेक्ट कन्वर्जन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, वेयर द सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू इट्स गैसियस फॉर्म विदाउट ऑब्टेनिंग टू द लिक्विड स्टेट. देन डिपोजिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेयर द गैसेस कैन बी चेंज टू इट्स सॉलिड फॉर्म without being obtained to its liquid condition. So all these things are present as the effect of heat or due to the action of heat. So when the heat is supplied or absorbed, then all these things be observed. So when heat is supplied, melting and evaporation goes on. When heat is absorbed, then condensation and freezing takes place. So these things you need to remember. Okay, so all these things what we had discussed till now, we had already studied in our previous classes. अब तक कोई ऐसा चीज नहीं डिस्कस किए हैं या कुछ ऐसा नहीं बताया है जो नहीं समझ में आना चाहिए या हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है? Now let's move to the main topic of this chapter, जो हम लोगों को मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है. That is the change in the shape and size of a body. जब हम लोग हीट को सप्लाई करते हैं किसी मटेरियल में, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उसके वॉल्यूम में चेंज आती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज वी डू यूज टू ऑब्जर्व इट्स शेप एंड साइज इज चेंज्ड. अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीट के सप्लाई करने से मैटर के स्टेट में चेंज होना. मैटर का फिजिकल स्टेट तब चेंज होता है जब मैटर के पार्टिकल्स स्प्रेड होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो जब पार्टिकल्स स्प्रेड होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उस कंडीशन में उस मैटर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. और जैसे ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वी विल ऑब्जर्व दैट इट्स शेप एंड साइज हैड ऑलरेडी गॉट चेंज्ड. एंड दैट कैन बी ऑब्जर्व फॉर एनीथिंग, वेदर इट इज अ सॉलिड
whether it is a liquid or it is a gas. So for solids, liquids, and gases, in all the three states of matter, we will observe that when heat is supplied to it, or even though when heat is absorbed from it, it expands or contracts. So that is the thing which we have to understand over here. So we don't have much time today, but then also a little bit I want to discuss. So when we do used to observe in the change in the physical appearance, means its shape and size, then we do observe that there are three different conditions of expansion or contraction in solid. First of all, we are going to discuss for the solids. अगर हम लोग देखते हैं चेंज इन शेप एंड साइज के रूप में सॉलिड्स के बारे में ऑन सप्लाइंग ऑफ हीट, तो तीन कंडीशन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन. These are the three different condition of expansion, or not only expansion, it can go along with the contraction also. Okay, सिर्फ ये expand करने की बात नहीं है, यहाँ पर contraction के बारे में भी हम लोग observe कर सकते हैं. The same principle or the same phenomena can be observed. So three conditions which we are going to understand. The first one is linear expansion, यानी straight path या straight line में expansion होना. Superficial expansion यानी length and breadth में expansion होना, due to which the area gets changed. And cubical expansion, which goes for a thicker body where we do have the length, breadth, and height. So in all its dimension, the expansion will occur and there will be a change in volume. So that is the cubical expansion. Over here, there will be a change in area, and over here, the change in length will be observed. So these three kind of expansions we are going to understand in this part. So let's see with the linear expansion. Okay? So what is linear expansion? किसको कहते हैं हम लोग linear expansion? So as the name only refers, so if the expansion took place in a straight line or in a straight path, then that is called to be as linear expansion. Suppose that you have a metal rod, ठीक है, एक metal rod है for a certain length, ठीक. अगर हम इसमें heat supply करते हैं from one end, then what is going to happen? We know metal is a good conductor of heat. So it will allow the heat to transfer. And as the heat is transferring from its molecules, the molecules will start expanding. And due to that expanding of the molecules, or the moving away of the molecules from each other, it will result to increase the length of this metal rod or metal pipe. And that increase in the length will be considered to be as the linear expansion. So over here, how much linear expansion can be done? That can be calculated with a simple formula where we can go for the original length of the body, the coefficient of the linear expansion for that specific metal, and the change in temperature between which this expansion had occurred. With this particular calculation, we can be able to identify the amount of linear expansion. So this topic again I'm going to discuss in the next class, as our class is going to end up in few seconds. So today I'm ending it over here only. Next day when we will meet, we will discuss some more things on this topic.